Welcome back to my channel, guys. This is the second video in this series, Basic of Coding Pythons. Using command Pythons. Comments are pieces of code that are not executed by the compiler. इसके कमेंट से कंपाइलर्स के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो सिर्फ प्रोग्रामर्स के अंडरस्टेबल के लिए रहता है कि इस किस चीज़ का प्रोग्राम है, हमने किस यहाँ पे कौन सा टास्क परफॉर्म किया है, इसलिए कमेंट्स का यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. Comments are lines of code that the programmers puts there for others to understand the code better. Examples, this is a comment. Comments को हम इस सिंबल से डिफाइन करते हैं जो कंपाइलर्स के द्वारा कंपाइल नहीं होता है, ये सिर्फ प्रोग्रामर्स के अंडरस्टेबल के लिए रहता है. जैसे कि हमने यहाँ पे 2 नंबर का सम किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे कमेंट्स दे दिया प्रोग्रामर टू ऐड 2 नंबर्स. ठीक, एक num1 लिया, num2 लिया, देन उसको ऐड किया. Now, executing command in Python. Any code you type needs to be run or executed before it will work. There are few different ways to execute code. You may want to run multiple lines of code at the same time. In that case, highlights the relevant lines have press the run selections of correct line. हम कमेंट्स को एक लाइन में भी दे सकते हैं, मल्टीपल लाइन्स में भी हम कमेंट्स को दे सकते हैं. Or press the keyboard shortcut or highlight code will be run at the same time. You can also try executing commands. तो कमेंट्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो सिर्फ प्रोग्राम्स के अंडरस्टैंड कर लेता है. हम उसको मल्टीपल लाइन्स में भी शो कर सकते हैं, सिंगल लाइन में भी शो कर सकते हैं. Now importing packages in Python. Packages contains specially designed code that will enable us to perform complex data science tasks without writing the code ourselves. To import these packages, you need to type and run the following 2 lines of code. अगर हमें पैकेजेस को इंपोर्ट करना है तो हमें ये 2 लाइंस की नीड होगी. Import pandas as pd and imports numpy as np. We import the packages using import. Now next up part is getting data into Pythons. Python के अंदर हम कैसे डाटा ले सकते हैं. In this text, we will use the read csv command using the following structures. And this is the structures. This command read csv comes from the pandas package. We imported the pandas packages pd. After importing the pandas package, we can access the read csv command by typing pd. Use the read csv command, type pd followed by a period. Then the command read csv. The next part of the code is the path of the data file contained in double quotes. Now next part is savings output in R and Pythons. हम इस प्रोग्राम्स को R में भी कर सकते हैं, Python भी कर सकते हैं, and we will discuss it only in Python in this series. Certain commands generators output that can be used in other lines of code to use the output in later code. You need to save the output as a named objects. To save the output, follow this structure. इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम अपना आउटपुट सेव कर सकते हैं. ठीक है. You may have inferred correctly that the commands we use read CSV generator and output of the bank marketing, training and dataset and that other things. And that we named it output bank. Importing datasets uses the same coding syntax as saving output and a particular name. And this is the examples of this saving start outputs, creating a contiguous tables in Python without saving the output. In Python, we run the name of saved output. Now next subpart is accessing records and variables Python. You may want to examine particular records. For example, how to access a record inside the bank train data set. मतलब डाटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं वेरिएबल्स इन पाइथन. We use the log attributes which all pandas data frames have and states what part of the data frame you want to see. Python's reference it records starting at record 0. So if you want to view the first record, we request record 0. Similarly, to view the second record, request records first and so on. For example, to see the first record of bank train, use the following code. And this is the code. And this is the records how to show. Thank you.